Hello everyone, इस वीडियो में I'll be showing you people how you can easily use Padlet for your classroom assignments and projects. Padlet एक बहुत ही easy, एक बहुत ही effective और useful edtech tool है जो teachers अपने assignments और instructions post करने के लिए use कर सकते हैं. The entire class और all your students can easily see it और वो वहाँ पे अपने assignments post भी कर सकते हैं. As an instructor आप अपने comments, अपना feedback, अपने response वहाँ post कर सकते हैं and everyone can easily read it. So it is a sort of, you can say, a discussion forum जहाँ पे आप सब चीज़ें post करते हैं. Plus it can easily make your classroom activities more fun, more interesting and more interactive for the students as well as for you. So first things first, you have to have a registered account on Padlet. आपको access करने के लिए Padlet पे account आपका होना ज़रूरी है. So अगर आप Google करेंगे आपको Padlet मिल जाएगा. Since I'm already registered, तो आपको इस तरह का dashboard नज़र आएगा. So you can see that I already have two assignments posted. One was posted 3 years ago and the second one was posted 2 years ago. So ये मैं use करती थी अपने students के साथ. On the top right corner you can see an option which tells you to make a Padlet. यहाँ पे आप अपने Padlet बना सकते हैं. So once you click on it you would see a couple of different canvases. So यहाँ पे आपके पास कुछ options हैं. अपना पसंद का canvas या Padlet आप choose कर सकते हो. Let's suppose if I choose this one. So आपके सामने एक Padlet आ जाएगा. Now you can easily customize it according to your preferences. On the right side you would see a menu bar. यहाँ पे आपके पास different options हैं. सबसे पहले तो you can write the title, for example my task or anything. In the second option यहाँ पे आप अपने instructions जो है वो पोस्ट कर सकते हैं. could be a question, could be some guidelines, could be some instructions, could be anything. Then you would see कि यहाँ पे आपके पास link option है. You have to copy this link and then you have to share it with your students. वो इस link को direct Google पे paste करेंगे और उनके पास उनका ये Padlet खुल जाएगा. Other than that, you can also see that if you want to customize your Padlet, then you would see a couple of different options. So you can change the color, you can change its texture, its pattern. You can also add a picture if you want. So यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं change करूँ तो let me choose this one. ये ज़्यादा vibrant है. So यहाँ पे मैंने अपने Padlet का पूरा जो है वो color भी change कर दिया है. So अच्छा, so if you want to display the author's name above each post, then you can choose this option. If you want to allow the viewers to comment on this post, you can also choose this option. इसमें कुछ और options भी हैं जो आपको नजर आ सकते हैं. And once you click all the options, once you're done with it, so यहाँ पे आप इसे final कर सकते हैं. So yeah, keep working. Next. So यहाँ पे जो है वो मेरा Padlet ready हो चुका है. Let me show you an example. जो मेरे previous Padlets थे और वहाँ पे assignments कैसे नजर आते हैं. Let me show you this one. ये काफ़ी कलरफुल सा वाइब्रेंट सा है. सो ये बहुत ज़्यादा अपीलिंग और अट्रैक्टिव भी लगता है स्टूडेंट्स को. यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स ने अपने असाइनमेंट्स पोस्ट किए थे. यहाँ पे मेरा टॉपिक है, देन आई पोस्टेड देन आई रोट सम इंस्ट्रक्शंस फॉर देम एंड देन यहाँ पे इनके असाइनमेंट्स इन्होंने अपलोड किए थे. लेट मी शो अनदर एग्जाम्पल. इसी तरह से आई give it a title, then I posted some instructions and then all the students they commented on it. कुछ ने यहाँ comment किया, कुछ ने files paste किए हैं और फिर मेरे response और मेरा feedback भी यहाँ मौजूद है. So yes, it's very easy and a very fun way to engage your students and ये boring नहीं करता assignments को, बल्कि I would say that ये ज़्यादा interesting बनाता है. So I hope this was helpful and आप लोग भी ज़रूर as a teacher you must use this in your classroom teaching as an activity. If you want to give an activity, if you want to give a project or an assignment, you can easily use this. Happy teaching. Thank you.